when we talk about something that we forget about, right? So आज का टॉपिक है forgetting about something, और हम उन sentences के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जब हम यूज करते हैं कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए जिसके बारे में हम कुछ भूल गए हैं, राइट? किसी चीज को कहीं भूल गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को कहीं छोड़ के आ गए हो, है ना? उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हिंदी का सेंटेंस नहीं पता कि मुझे इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो आप बेसिक वर्जन यूज करेंगे। अगर आप ऑलरेडी बेसिक वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप बेटर वर्जन यूज करेंगे। अगर आप ऑलरेडी बेटर वर्जन पे हैं तो डेफिनेटली आप वाव वर्जन यूज करेंगे। ऑलराइट? अरे मैं भूल गया, बहुत इजी। कैसे बोलेंगे, जल्दी बताओ इसको इंग्लिश में। Oh, I forgot. Oh, I forgot something, right? कुछ को क्या बोलते हैं? Something. That means you are on basic. तो अब better कैसे बोलेंगे? Oh no, I completely forgot. Oh no, I completely forgot. Practice along. बोलो बोलो. Oh no, I completely forgot. Quickly. Oh no, I completely forgot. और जब wow version बोलेंगे कैसे बोलेंगे? Oh no, my mind just slipped and I forgot. क्या बोलेंगे? Oh no, my mind just slipped and I forgot. Yes. All right, let's move to the second one. मुझे यकीन था कि मैंने इसे कहीं रखा है ना? या मुझे लगता है मैंने इसको कहीं रखा था, अब याद नहीं आ रहा कहाँ रखा था। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, बताइए। Anybody? I am remembering that I have but I forgot. Let's see. I was sure I kept it somewhere. यकीन को क्या बोलते हैं? Sure. Sure. I was sure I kept it somewhere. Better कैसे बोलेंगे? I clearly remember keeping it somewhere. Yes? Yes. Better version अच्छा है। चलो इसको practice करते हैं. Quickly practice along. Repeat after me. I clearly remember keeping it somewhere. there. Oh, I clearly remember keeping it somewhere, right? And wow version में कैसे बोलेंगे? I swear I saw it a moment ago. Where did it go? है ना? अरे यार कसम से अभी तो देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। बोलता है ना? चलो चलो practice along. I swear I saw it a moment ago. Where did it go? किधर गया? Right? Quickly speak along. I swear I saw it a moment ago. Where did it go? It is not ego, it's ago. Oh. Okay? I swear I saw it a moment ago. Where did it go? Right? Okay, let's move to the next one. मैंने सुबह से इतना कुछ किया कि मैं भूल ही गई। मैं किसी ने आपको कोई काम दिया और उसे बोल रहे यार पता है सुबह से कितना काम था, मैंने इतना काम किया सुबह से कि मैं भूल ही गया। चलो बताओ इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have done a lot. I have done so much things that I forgot. Okay, Aranya was saying something. Tell me, Aranya. I have done a lot since morning and I have forgot. Okay, repeat Parth, what you have said. I think no, sorry. I have done so much things that I forgot. So many things. You Sorry, can so many say things that I forgot. both of you are correct. I did so many things, but subah se hai, then we use since morning. I did so many things since morning, or you can say I did so much since morning that I forgot. And you want to know how to translate this in a better version? Arey yaar, I was so busy that it slipped my mind. I was so busy today that I slipped my mind. Today that Interesting? slipped my mind. You want to use better version? No, wow wasn't. Okay, practice this. I was so busy today that it slipped my mind. I was so busy today that it slipped my mind. Okay. My day was so packed that it completely escaped my mind. Escape means दिमाग से निकल के भाग जाना, बाहर भाग गया. My day was so packed that this completely escaped my mind. अरे मुझे लगा मैंने इसे अपनी जेब में रखा था, अभी तो रखा था, कहाँ चला गया? अभी तो जेब में रखा था. Where did it go? I thought that I have kept something in my pocket.
I think I have kept it in my pocket. But I thought, yes. Kept it This one. in my pocket. So I think नहीं, I thought. मुझे लगा, मुझे लग रहा है या मुझे लगे, मतलब लगता है नहीं, मुझे लगा, तो it's in past. I thought I kept it in my pocket. Now, how to use it in a better way? I was sure it was in my pocket. So how you can say? I was I was sure it was in my pocket. I was sure it was in my pocket. And how to use better? मैं शब्द लगा सकता हूँ, मेरी पॉकेट में था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया. I can bet it was in my pocket. Where did it vanish? गायब हो गया मतलब vanish, है ना? Okay, okay, quickly repeat. Practice along. I could bet it was in my pocket. Where did it vanish? Okay, so अब तक पता चल गया होगा the basic, better, wow. तीनों में लेवल ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ता है ना? बीच में हम वर्ड्स भी सीखते हैं, प्लस एक्सप्रेशन लेवल बढ़ता है. we become more expressive in the vowel, right? Okay. अभी हम सिंपल सा बोल रहे हैं, अरे I thought I kept it in my pocket, और फिर बोल रहे I could bet it was in my pocket. Where did it vanish? कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है सुनने में? Wow. वाओ, तभी वो वाओ है. राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओ नहीं, मैंने अपना फोन घर पे छोड़ दिया. Oh no, I forgot my phone at home. Yes. Oh no, I forgot or I left my phone at home. So you are on basic. Now you are going to use better version. That is, oh no, I forgot my phone. That means you are on better. Or you can use, oh great, a day without my phone. This is going to be interesting. you are converting the negative thing into positive. What you can say? Oh great, a day without phone. That is going to be interesting. We will become more observing, है ना? हम और ज्यादा ऑब्जर्विंग हो जाएंगे, हम चीजों को और डीपली ऑब्जर्व करेंगे, राइट? That is the thing going to happen from today. That is changing negative things to what? Positive. Correct. Okay. ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? ऐसे कैसे भूल गया यार? अरे ऐसे कैसे हो गया? Tell me. How can I forget this thing? Yes. You can say, how could I forget this? Or how can I forget this? Right? You know, can और could में slight सा difference है. Can में आप नॉर्मली बात करते हो और could में आप ज्यादा पोलाइट हो जाते हो, या फिर फॉर्मली अगर बात करना चाहते हो तो आप can की जगह could यूज करते हो, राइट? तो पोलाइटनेस शो करने के लिए आप can की जगह क्या यूज करेंगे? could. फॉर्मली, इनफॉर्मल आप can यूज करेंगे, फॉर्मली आप could यूज करेंगे. ठीक है? गॉट इट? Yes, ma'am. और इसको बेटर कैसे बोलेंगे? अरे हाउ डिड दिस स्लिप फ्रॉम माय माइंड? मेरे माइंड से कैसे निकला, राइट? और वी कैन से, आई कांट बिलीव आई फॉरगेट दिस. व्हाट वाज आई इवन थिंकिंग? अरे मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं भूल गया, मैं सोच क्या रहा था, राइट? क्विकली प्रैक्टिस अलोंग, स्पीक अलोंग. I can't believe I forgot this. What was I even thinking? I don't know what you were thinking. Yes, you will get the same reply. अरे यार, मुझे क्या पता तू क्या सोच रहा था, right? All right, let's move to the next one. अरे यार याद था फिर भी भूल गया. I know it, still I forgot it. I remembered or I knew it, still or yet I forgot. Or you can say, it was on my mind, yet I forgot. You know, फिर भी के लिए yet यूज होता है. फिर भी के लिए क्या यूज होता है? Yet. I remembered, yet I forgot. Better version, it was on my mind, yet I forgot. And wow version, I can't believe I forget this. What was I even thinking? देखा? Same pattern. Right? Yes, ma'am. यहाँ पर यूज होता है sense, जो मैं हमेशा सिखाती हूँ. You can use, ये जो wow versions है ना, these are giving the same sense जो हमारा हिंदी सेंटेंस दे रहा है, but with the usage of what? Different words.
more expression, right? We need to be more expressive. Okay, next one. अब क्या करूं? बहुत जरूरी चीज थी. What I will do now, it was very important. What I will do now, it was very important, or you can say now what to do. Important. Very important, right? Better version. What now? It was very important. It was really. This was crucial. Very important को क्या बोलते हैं? Very important के लिए क्या word use करते हैं? Crucial. What we use? Crucial. Crucial. This was crucial, and now I completely stuck. What you can say? And now I am completely stuck. Practice the entire sentence. This was crucial, and now I am completely stuck. Now you need to do one thing. There are many sentences in this session. Pick one which hits here. ठीक है? जो अच्छा लगता है, मजा आ जाता है जिस सेंटेंस को देखकर, एक सेंटेंस चूज करो, and at the end I'll ask which sentence you have picked from today's session. Okay? Everybody, you need to answer this. All right? Got it? Yes, ma'am. Okay. अब वापस जाना पड़ेगा इसे लेने में, क्योंकि मैं तो इसको घर पे भूल गई. अब वापस जाना पड़ेगा. Now I have to go back to receive. Again, to receive it. To Now take it. I have to go back to get it. Right? लेने जाना पड़ेगा. यहाँ पे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? टेक इट. बट हम क्या बोलेंगे? किसी चीज, अपनी ही चीज को लेकर आना है तो गेट इट. ओके? और इसको बेटर वर्जन में कैसे बोलेंगे? I have no choice but to go back and get it. What we can say? I have no choice Go but to back go and back and get it. क्योंकि इसे लेने तो जाना ही पड़ेगा, right? जब लेने जाना ही पड़ेगा तो क्या बोल सकते हैं? I have no choice. And now wow version. Looks like an unplanned trip back home is happening, right? मतलब अब तो घर जाने की एक अनप्लान ट्रिप होने वाली है, चाहे वो 10 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो, ट्रिप तो ट्रिप होती है. ठीक है? So practice this. Speak along. Looks like an unplanned trip back home is happening. Yes. Okay, tell me which is amazing. Which sentence is amazing? Wow. Wow, because it is wow. Okay. मुझे लगा मैंने लिस्ट बना ली थी, फिर भी भूल गया. I thought that I have made list, but yet I forgot. I thought I made a list, still I forgot. I even made a list, yet I missed it. और यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस में बेसिक में yet भी यूज कर सकते हो. It is completely correct. Okay? And for the better version, I even made a list. अरे मैंने यार लिस्ट भी बना ली थी, फिर भी भूल गया. है ना? कितना भुलक्कड़ हूं मैं. कहते हैं ना, बोलू राम भुलक्कड़. है ना? Okay. चलो, अब जो हुआ सो हुआ. Let's go now. बोलते ना, चल हो गया सो हो गया, छोड़ो. Let it be what happened. Okay, so it is okay. Whatever happened, happened. Or we can say in a better version, no point stressing. What's done is done. और आप बेसिक में ये भी बोल सकते हो, what's done is done. ठीक है? बेसिक में what's done and is done can be used, and on better version, no point stressing. अब stress लेने से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया, है ना? No point stressing. What's done is Done. Done. Okay, well, what's done is done. Let's find a way to fix it now. अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या करें? अब उसको ठीक करने का रास्ता भी कौन ढूंढेगा? गलती तो हमने करी है ना? कौन ढूंढेगा? हम. Okay, practice this sentence along. Well, what's done is done. Let's find a way to fix it now. Okay, what's done is done. Let's find a way to fix it now. So here we are done with the session. I hope you have loved the wow sentences.